देखो, जस्ट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस रिवर्सिबल वो भी क्लोज्ड सिस्टम में आइडियल केस के द्वारा परफॉर्म जब की जाएगी, उसका फॉर्मूला हमने निकाला कि Q इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो क्या ये सेकंड लॉ को वायलेट नहीं करता क्योंकि Q इज इक्वल टू डब्ल्यू बोल रहे हैं? पहली बात, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ साइकिल कहता है कि फॉर अ साइकिल हीट एडिशन इज इक्वल टू वर्क दिस। तो मतलब Q एडिशन माइनस Q रिजेक्शन इज इक्वल टू वर्क एडिशन माइनस वर्क आउटपुट, वर्क इनपुट। So the second law says Q rejection cannot be zero. This is the statement of the second law. Means all the heat added to the system won't be converted to the work output. This is the second law of thermodynamics, and this also is valid from first law of thermodynamics. So no problem. So second law says that for a cycle Q rejection cannot be zero. But now we are talking about isothermal process. For a process, all the heat added to the process can be converted to the work output. Q is equal to W from the process 1 to 2 isothermal process, and yes, all the heat that is added to the process can be converted to the whole work, and this does not violate second law because second law is for a cycle. For a cycle, you cannot construct a cycle out of this. Means, suppose you went from 1 to 2, you supplied heat and you got the work and you reached at state 2, because whenever heat is supplied and some work is done, the state of the system will change. Now you have to construct a cycle. How will you construct a cycle? Cycle means you have to reach the state 1. How can you reach the statement? State 1. How will you reach the statement? Okay, you can do is you gave the heat Q, you got the work. Now you give the work, you get the heat. But we are producing a work producing cycle. So giving work back and taking heat and reaching state 1 is not feasible and should not be there, because we have to produce a work. So what we do is, and suppose you have to reach a state 1. To reach a statement state 1, as this is a reversible process, अगर मैंने Q दिया W मिला, तो अगर मैं W दूँ तो Q वापस मिलेगा और सिस्टम अपने स्टेट 1 पे चल देगी. दिस इज परफेक्टली वैलिड, नो प्रॉब्लम. बट वी आर प्रोड्यूसिंग अ वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल. सो गिविंग वर्क बैक इज नॉट, क्यों वर्क ही तो चाहिए, वर्क वापस दे देंगे, हीट थोड़ी ना चाहिए. स्टेट 1 हमें पहुंचना मकसद नहीं, हमारा मकसद है वर्क निकालना. तो इससे स्टेट 1 कैसे जाएंगे? अब ये वर्क दे के तो नहीं जा सकते. ऐसा करते हैं, एक साइकिल बनाते हैं जिसमें वर्क ये ना देना पड़े. हम ऐसा करते हैं, ऐसे कहीं घूम के जाते हैं, कहीं ऐसे कुछ, कहीं हीट दे दी, कहीं थोड़ा सा वर्क इनपुट दे दिया, थोड़ी सी कहीं हीट इनपुट करवा दी, समझे? मतलब ये वर्क आउटपुट है, थोड़ी सी वर्क इनपुट करवा दी, कहीं हीट इनपुट करवा दी. सो सेकंड लॉ कहता है कि अगर तुम्हें एक कंटिन्यूस साइकिल बनानी है ऐसी, जहाँ वर्क तुम्हें मिलता रहे, तो तुम्हें क्यू रिजेक्शन को ज़ीरो नहीं कर सकते. फॉर अ साइकिल क्यू रिजेक्शन ज़ीरो नहीं होगा. मतलब ऐसी कोई न कोई ऐसी प्रोसेस बनानी पड़ेगी लीडिंग टू द स्टेट 1. स्टेट 1 पहुँचने के लिए कोई ना एक ऐसी प्रोसेस होगी जहाँ से हीट रिजेक्शन होगा. हीट रिजेक्शन तो करवाना पड़ेगा, कोई ना कोई एक प्रोसेस होगी. कहीं किसी प्रोसेस से अगर हीट एडिशन हो रही है तो किसी प्रोसेस से हीट रिजेक्शन करवाना पड़ेगा स्टेट 1 रीच करने के लिए. Stop. So for a isothermal process, it is only possible कि Q is equal to W, and this is not even a problem because this is process, and process cannot be process में अगर जब तक एक कोई न कोई प्रोसेस Q रिजेक्शन नहीं होगी, it cannot be formed into a cycle.
लाइक दिस आइसोथर्मल कैन नॉट बी फॉर्म इनटू अ साइकिल, जैसे कि आइसोथर्मल को साइकिल बनने की कोशिश करें। 1 से 2 क्यू लिया, वर्क मिला, पूरा का पूरा क्यू वर्क में मिला, बिल्कुल दिस इज़ वैलिड फॉर अ प्रोसेस। बट अब इसे हमें कंटिन्यू साइकिल बनानी है, तो मैं ऐसे जाऊँ या किसी भी तरह से स्टेट 1 में पहुँचूँ, तो मुझे अगर मैं समझ लो 1 से 2 जा रहा हूँ ऐसे थर्मल प्रोसेस में, और 2 से 1 जा रहा हूँ एडियाबैटिक कंप्रेशन की मदद से। Adiabatic compression if I'm doing, then I have to give the work, and there is a thing, work adiabatic compression में ज़्यादा देना पड़ेगा to reach the state 1। so वर्क जितना मिला उससे ज़्यादा मुझे दिया ताकि एक कंटिन्यू साइकिल बना सकूँ। so this is not feasible। now if we take other type of process like isobaric, isochoric, polytropic, adiabatic, in all this process Q is equal to W plus delta U। so all the heat supplied even in a process is used for work and change in internal energy, but only for isothermal all the heat supplied is used for work, and that is for a process। and second law deals with a cycle। for a process you can do that, but you cannot form a cycle after